हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका एंड दिस इज अ सीरीज वे वी आर सॉल्विंग नीट पीवाईक्यूज फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन। बहुत सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट। तो आपको पता है ह्यूमन फिजियो कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलराइट। एंड फ्रॉम एवरी चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियो यू कैन एक्सपेक्ट ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आप इसमें से इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपने अच्छे से चैप्टर को रीड आउट किया है, राइट? अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, डायग्राम्स आर क्लियर एंड बिकॉज आई एंड ईयर आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस एनी मोर, तो उसकी जगह मैंने आपके लिए कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए आज के सेशन के लिए, जो कि आप अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? सो लेट्स बिगिन। आई होप आपका नोटबुक पेन आपके साथ है। प्लीज मेक अ लिस्ट कि कितने क्वेश्चन सही हुए एंड कितने गलत। एट द एंड यू विल गिव मी योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन दैट मैम आई हैव डन these many wrong and these many right. Okay, so for every question I am going to give you 20 seconds to write your answer in the comment section. Without any further delay, let's get started. So the first question comes here on your screen. NEET 2023 question means इसी साल पूछा गया सवाल है। Parts of the human brain that help in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. is which region? Which part of the brain controls all these activities? Corpus callosum and thalamus, limbic system and hypothalamus, corpora quadrigemina and hippocampus, brain stem and epithalamus. Which part of the brain is going to control your emotions, your sexual behavior, your excitement, your pleasure, your rage? Okay, that's the question and I'm setting your timer here. 20 seconds would be enough. जल्दी से सोच के आप अपना आंसर लिख पाएंगे 20 seconds में. This timing is enough, I suppose. So here begins your time. Hurry up. Read the question carefully. The part of human brain that helps in regulation of sexual behavior, excitement, pleasure, rage, etc. is called what? Corpus callosum or thalamus, limbic system, hypothalamus, corpora quadrigemina, hippocampus, brain stem and epithalamus. So of course children, right answer is limbic system, right, including your amygdala, hippocampus, along with your hypothalamus. It regulates the sexual behavior and expression, okay, expression of excitement and other emotions of your body. Is that clear? तो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस दोनों मिलकर इस पोर्शन ऑफ योर इस पार्ट ऑफ योर बॉडी को रेगुलेट करते हैं। क्लियर? ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट्स ऑफ, नीट 2023 का क्वेश्चन है, ब्रेन स्टेम में क्या क्या इंक्लूड करोगे आप? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, फोर ब्रेन, सेरेबेलम, पॉन्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्पोरा, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और कॉर्पस कैलोसम. Which of the following will be included in your brain stem part? Hurry up. 20 seconds for you to answer. Quickly read. That's a very frequently asked question. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सिंपल भी है कि ब्रेन स्टेम बेसिकली कौन से रीजन को बोलते हैं साथ में? Is it mid brain, pons and medulla, fore brain, cerebellum, pons, thalamus, hypothalamus, corpora quadrigemina, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और कॉर्पस कैलोसम? तो ऑफ कोर्स बच्चों, क्योंकि मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला एक स्टेम की तरह, राइट, इफ दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज द पॉन्स एंड दिस इज द मेडुला, राइट, ऐसे एक स्टेम की तरह एक लाइन में पड़े होते हैं. दैट्स व्हाई दे टुगेदर आर कॉल्ड ब्रेन स्टेम. दे आर टुगेदर कॉल्ड ब्रेन स्टेम पार्ट. मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला. ओके, clear? So you can see here. Next question on your screen. NEET 2022 it was asked. Match list 1 with list 2. Now what is in the list 1? We have different types of neurons and nerve fibers given. For example, multipolar neuron, bipolar neuron, myelinated nerve fiber, unmyelinated nerve fiber. And in the list 2 we have somatic neural system, cerebral cortex, retina of eye or spinal nerves. Choose the correct answer from the options given below, that which type will be found where. So here begins your time.
20 seconds, hurry up, match the right list. Right option with the right option in the other list. Multipolar neuron, bipolar neuron, myelinated nerve fiber, unmyelinated nerve fiber. 5, 4, 3, 2 and 1. Of course, but your right answer is option 4, because multipolar neurons you will find in cerebral cortex. Your brain mainly comprises of multipolar neurons. If I talk about bipolar neurons, they are found in retina of eye. If I talk about myelinated nerve fibers which have a myelin sheath around, ठीक है, सबके सब न्यूरॉन्स में माइलिनेटेड शीथ नहीं होती. जिन नर्व फाइबर्स में माइलिनेटेड नर्व शीथ होगी वो कहाँ मिलेंगे? स्पाइनल नर्व्स के अंदर. अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की बात करें तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट है. ओके, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो आपकी वॉलेंट्री राइट मसल्स के साथ डील करता है. वॉलेंट्री मसल्स विच आर अंडर योर कंट्रोल. ओके, is that clear? So we have 2 types of nerve fibers and we have 3 types of neuron. Unipolar neuron is also there, that's found in embryonic stages. Okay, clear? Select the incorrect statement regarding synapses. Question from NEET 2022. Impulse transmission across a chemical synapse is always faster than an electrical impulse. The membranes of presynaptic and postsynaptic are in close proximity in an electrical impulse. Electric current can flow directly from one neuron into the other across the electrical synapse. Chemical synapse use neurotransmitters. Which of the following statements is incorrect? Means you have to mark the wrong statement basically. So whenever you read the question, जब भी आपको question में कोई ऐसा word मिले, no, नॉट, रॉन्ग, इनकरेक्ट, फॉल्स, तो आप उसको पहले ही हाईलाइट कर लो सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली देन. ठीक है, सो रीड ऑल द स्टेटमेंट्स. 20 seconds, hurry up. Quickly you have to let me know in the comment section option A, B, C or D. Which one is incorrect regarding synapses? Synapses are gaps between 2 consecutive neurons. 3, 2, 1, time up. Of course, children, if you think that chemical synapse is faster than electrical impulse, that's totally wrong. Electrical impulses are faster than chemical synapses. Chemical synapses जो हैं travel करते हैं neurotransmitters की form में, chemicals की form में, but electrical impulses travel in the form of charge in the body. Positive and negative ions in the body, and across the neuron also they are going to jump like that. They are going to move to the other neuron in the form of charges, in the form of electric charges or ions. Okay, not in the form of chemicals. Because अगर chemical synapse की बात करें तो पहले electrical signal will get converted into chemical, then chemical gets converted into electrical again. So that keeps on going and it takes time. Okay, तो impulses जो हैं हमेशा electrical impulse में ज़्यादा तेज travel करेंगे instead of chemical synapse. Okay. Which of the following is associated with decrease in cardiac output? Basically, brain का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपकी हार्ट की एक्टिविटी को, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करने के लिए, मतलब रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिंपैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन. Which of the following is associated with decrease in cardiac output? 20 seconds, hurry up. Sympathetic nerves, parasympathetic neural signals, pneumotaxic center, adrenal medullary hormones. 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, time up. Of course, children, it is the pneumotaxic center situated in the medulla region that is going to decrease the cardiac output. So heart activity will be regulated by pneumotaxic center. Clear? Next question. So you can see here, even आपके इस chapter में भी body fluids and circulation में तो आपने पढ़ा ही है, but you know that the medulla of the brain is connected to the spinal cord. Medulla contains centers which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretions.
तो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस कहां से कंट्रोल होंगे? हाइंड ब्रेन से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन? नीट 2019 क्वेश्चन। बच्चों बिलीव मी, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड 3 to 4 टाइम्स इन द नीट पीवाईक्यूज। अभी ये 2019 का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ, सिमिलरली आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। थर्मोरेगुलेशन की एक्टिविटी से रिलेटेड, इस क्वेश्चन के ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 3 बारी और मिलेगा कम से कम, ठीक है? तो थर्मोरेगुलेशन मींस टेम्परेचर कंट्रोल। विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज गोइंग टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी? हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्रम। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? 20 seconds, come on. Which part of the brain is responsible for thermoregulation? Hypothalamus, corpus callosum, medulla oblongata, cerebrum. 5, 4, 3, 2 and 1. Time up. Of course children, right answer is that hypothalamus is going to control the temperature of your body. The homeostasis of your body, internal temperature maintenance is done by hypothalamus. Urge of drinking, urge of eating, that's also controlled by hypothalamus region. So you can underline in the NCERT book because it is a very important role and important, PYQ also. An important part of the brain, hypothalamus, lies at the base of thalamus. It contains a number of centers that control body temperature, urge for eating and drinking. It also contains group of neurosecretory cells which are responsible for secreting hypothalamic hormones. So it is a master gland, right? It's a master gland. Okay, hypothalamus is responsible for such functions in the body. और इसमें से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ऑलरेडी अपनी एनसीईआरटी बुक में। क्लियर? रिसेप्टर साइट्स। So question from NEET 2017, receptor sites for neurotransmitters are present on membranes of synaptic vesicles, presynaptic membrane, tips of axons, postsynaptic membrane. तो आपकी जो रिसेप्टर साइट्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की, राइट, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, कहाँ अकर करती हैं? सिनेप्टिक वेसिकल की मेम्ब्रेन पर, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, टिप ऑफ एक्सॉन पर या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। 20 seconds, hurry up, write your answer. So just try to recall that diagram जो हमने करा है related to showing you the region of synapses between two neurons. Yes, how is it formed and where are the receptors located for neurotransmitters? 3, 2, 1, time up. So of course children, it is post-synaptic membrane, right? हमने पढ़ा if this is the axon terminal, right? If this is the axon terminal of the first neuron and this is the dendrite of the next neuron, तो dendrite of the next neuron पर क्या present होंगे? Receptors, right? तो ये एक pre-synaptic membrane हुई और ये इसके बाद जो हमें मिलेगी that's a post-synaptic membrane. This is a post-synaptic membrane, right? और in between जो आपको एक gap दिख रहा है, right? This gap is called synaptic cleft. This gap is called synaptic cleft. Okay, so presynaptic, postsynaptic, and in between we have synaptic cleft. So you can see that this is axon, right? उसके बाद axon terminal आ जाएगा first neuron का. First neuron के axon terminal में vesicles होंगी, synaptic vesicles, जिनके अंदर neurotransmitter, chemicals, भरे हुए होंगे. लेकिन जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट, जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आकर फ्यूज करेंगे विद द मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इट इज गोइंग टू रिलीज द केमिकल्स इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट रीजन है, गैप है, राइट, एंड दिस साइनेप्टिक क्लेफ्ट it will be transferring the chemicals to the receptors present on the next side. Receptors कहाँ present हो गए? They will be present on post-synaptic membrane. Is that clear? So pre-synaptic membrane, first neuron का जो surface है, ending terminal है, and post-synaptic will be the dendrite of the next neuron. Clear?
Next question. Myelin sheath is produced by which cells are responsible for producing myelin sheath? Question from NEET 2017. Myelin sheath is produced by Schwann cells and oligodendrocytes, astrocytes and Schwann cells, oligodendrocytes and osteoclasts, osteoclasts and astrocytes. Which cells are responsible for producing myelin sheath? 20 seconds, simple question. Myelin sheath is produced by, yes, hurry up children, time up. So of course children, myelin sheath is going to be produced by cells like Schwann cells and oligodendrocytes. So that's the right answer. Schwann cells occur in CNS and oligodendrocytes occur in PNS. Myelin sheath is produced by these cells. Okay. Next question. AIPMT 2014. How do parasympathetic neural signals affect the working of heart? Parasympathetic neural signals. They reduce both heart rate and cardiac output. Heart rate is increased without affecting the cardiac output. Both heart rate and cardiac output increases. Heart rate decreases but cardiac output increases. Parasympathetic neural signals. So we know कि हमारी बॉडी में autonomic neural system work करता है, which has sympathetic and parasympathetic activity, right? तो parasympathetic activity में से आपसे पूछ रहे हैं कि इन options में से what could be the application of parasympathetic system? Reducing heart rate and cardiac output. Heart rate is increased without affecting cardiac output. Both heart rate and cardiac output increase, or heart rate decreases but cardiac output is increased. 20 seconds, write your answer. Option A, B, C or D. How do parasympathetic neural signals affect the working of the heart? 5, 4, 3, 2, 1, time up. So of course children, sympathetic nervous system is जो emergency conditions में activate होगा. For example, release of adrenaline while you are in an emergency situation. आपके पीछे कोई कुत्ता भाग रहा है तो आपकी situation क्या होगी? Emergency situation होगी. क्या होगा बॉडी में? Breathing rate increase करेगा, heart beat increase करेगी, cardiac output increase करेगा, adrenaline hormone will be released, adrenaline rush हो जाएगा बॉडी में, blood pressure will increase. लेकिन इन सब एक्टिविटीज को आफ्टर अ वाइल व्हेन नॉर्मल सिचुएशन आएस, राइट, नॉर्मल सिचुएशन वापस आ जाएगी तो आपको इन सबको रेगुलेट करना पड़ेगा. तो उस सिचुएशन को वापस नॉर्मल लाने के लिए कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है बॉडी में? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल. और जब पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अपना काम करेगा तो क्या होगा? हार्ट रेट भी डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, इट विल कम बैक टू नॉर्मल. ओके, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो गया था, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया था, दैट इज गोइंग टू कम बैक टू नॉर्मल. ओके, इज दैट क्लियर? सो दैट्स द रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2004. Injury localized to the hypothalamus would most likely disrupt. अभी मैंने आपको कहा था हाइपोथैलेमस से रिलेटेड 2 से 3 और सवाल आने वाले हैं, राइट? तो ये देखो, हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग से रिलेटेड पूछा गया कि अगर हाइपोथैलेमस इंजरी के दौरान डैमेज हो जाता है ब्रेन में तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन विल बी लॉस्ट, executive functioning such as decision making will be lost, or regulation of body temperature will be disrupted. So which of the following is the function of hypothalamus region जो कि affect होगा if the hypothalamus is injured in your brain? Is that clear? 20 seconds, come on, hurry up, write your answer. Injury localized to the hypothalamus would most likely disrupt what? Short-term memory, coordination during locomotion, executive functioning of decision making, or regulation of body temperature. So of course children, हमने डिस्कस किया पहले भी, hypothalamus has a very important role in maintaining your internal body temperature. तो body temperature की जो regulation है that will get disturbed.
अदर देन दिस अगर ऑप्शन में ड्रिंकिंग ईटिंग की अर्ज भी होती और सिक्रेशन ऑफ सर्टन हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स भी रिलेटेड होता, तो दैट वुड ऑल्सो वुड हैव बीन राइट. ओके, क्लियर? सो वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड दिस. हाइपोथैलेमस का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या करता है? कंटेन्स नंबर ऑफ सेंटर्स कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कंटेन्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो क्या रिलीज करते हैं? हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स. So very important line. Clear? Next question again related to synapses. NEET 2013 का सवाल है. A diagram showing axon terminal and synapse is given. Identify correctly at least 2 from A to D. A से लेकर D तक labeling given है. आपको 2 correct at least labels identify करने हैं. A is receptor, C is synaptic vesicle, B is synaptic connection, D is potassium. A is neurotransmitter, B is synaptic cleft, C is neurotransmitter, D is calcium. See, look at it. A, B, C and D. Out of these, which is the correct labeling? Look at the diagram carefully. Just observe it first of all. Right? कहाँ पर क्या marked है? 20 seconds, hurry up. 20 seconds, come on. A is receptor, C is synaptic vesicle, B is synaptic connection, D is potassium, A is neurotransmitter, B is synaptic cleft, C is neurotransmitter, D is calcium. 3, 2, 1, time up. So of course children, right answer is that A is receptor. You can see post synaptic membrane है ये. This is the post synaptic membrane. राइट और इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लोकेटेड है? रिसेप्टर्स. दीज आर रिसेप्टर्स. दीज आर रिसेप्टर्स. क्लियर? एंड देन वी हैव सी पोर्शन दैट इज रिप्रेजेंटिंग यू द synaptic vesicles carrying neurotransmitter. So 2 correct labelings A and C. Okay? And you have already seen this diagram. तो हमसे क्या क्या पूछा गया था इस सवाल में? राइट? हमसे पूछा गया था labeling of the receptor regions. A was marked receptor and then we were asked about synaptic vesicles. C region was synaptic vesicle containing neurotransmitter. Now, the human hindbrain consists of 3 parts. तो हमें पता है forebrain, midbrain, hindbrain, right? Hindbrain region के 3 parts हैं. One of which is spinal cord, कॉर्पस कैलोसम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस. ह्यूमन हाइंडब्रेन में 3 पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट कौन सा है? क्या वो स्पाइनल कॉर्ड है, कॉर्पस कैलोसम है, सेरेबेलम है या हाइपोथैलेमस है? 20 सेकेंड्स, कम ऑन. स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्पस कैलोसम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस. 5, 4, 3, 2 and 1, time up. Of course children, hindbrain का part that is cerebellum. So there are 3 parts of hindbrain: pons, medulla and cerebellum. Cerebellum, right? So these are the 3 parts of hindbrain. Clear? So see, what are the 3 parts? You can see here, hindbrain comprises pons, cerebellum, medulla. Medulla is also called medulla oblongata. Clear? These are regulatory centers of respiratory and heart controls, right? When a neuron, AIPMP question, when a neuron is in resting state, not conducting any impulse, the axonal membrane is. So just assume a condition कि आपका जो न्यूरॉन है, राइट, वो रेस्टिंग स्टेट में है, कोई इंपल्स जनरेट नहीं हो रही है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? क्या सिचुएशन होगी? इट विल बी इक्वली परमिएबल टू बोथ सोडियम एंड पोटेशियम, impermeable to sodium and potassium, comparatively more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium, or comparatively more permeable to sodium and nearly impermeable to potassium. Which will be the condition that you find in a resting neuron which is not conducting any impulse? 20 seconds for this question.
So you have studied the polarity, किस तरह का चार्ज एग्जिस्ट करता है आउटसाइड द एक्सॉन एंड इनसाइड द एक्सॉन. ओके, इक्वली परमिएबल होगा, आयंस के लिए इम्पर्मिएबल होगा या कंपैरेटिवली मोर और लेस परमिएबल. 3, 2, 1 टाइम अप. सो ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, जब रेस्टिंग पोटेंशियल होगा तो एक्सोनल मेम्ब्रेन की कैपेबिलिटी होगी टू रिमेन मोर परमिएबल टू सोडियम. मतलब ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज ऑफ because sodium is less positive, right? Sorry, the potassium is more the potassium is less positive, right? तो potassium less positive होने की वजह से it is in the exoplasm and sodium ions are more positive and they are present outside the exoplasm. So that's a situation जब axon resting state में है, कोई potential generate नहीं हो रहा है. Clear? So that's the situation. This is more positive, this is less positive. So you can see when a neuron is not conducting any impulse, that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions. So sodium ions bahar, potassium ions andar, providing more negative charge to the exoplasm. Clear? And also this negativity of exoplasm comes from the negatively charged proteins. जो negatively charged proteins present होते हैं exoplasm में, वो भी काफी हद तक contribute करते हैं to provide negative or less positive charge to the exoplasm, inner side of axon. Clear? Next question. AIPMT से the nerve centers which control the body temperature and urge for eating are contained in. So again same question repeated. Hypothalamus, pons, cerebellum, thalamus. Already हम question कर चुके हैं, so you won't need much time. 20 seconds. Which part of the brain is going to control the body temperature and urge for eating? Hypothalamus, pons, cerebellum, thalamus. 5, 4, 3, 2 and 1 time up. Children, right answer is of course hypothalamus region is responsible for controlling your eating, drinking, body temperature and hypothalamic hormones. It's a master gland. So we have already marked this line. Okay, clear? Next question. Which part of human brain is concerned with the regulation of body temperature? Again same question. So let's see. 2010 में, right? 2010 में, और उसके बाद अगर हम वापस जाएं, राइट, 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स कम बैक. 2019, 2010 एंड 2009 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस. क्लियर? रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस. सो दिस इज 2010 और देखो अब 2009 का क्वेश्चन. विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर? मेडुला, सेरेबेलम, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस. तो कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है 20 सेकेंड्स की, पता है आपको. राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस रीजन इज गोइंग टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर. क्लियर? अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज, दिस इज एन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. अनमाइलिनेटेड, ऐसा नर्व फाइबर, ऐसा न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है, उसको अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर कहेंगे. क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी? It is not enclosed by a Schwann cell and not enclosed by myelin sheath. Enclosed by a Schwann cell that does not form myelin sheath. Not enclosed by a Schwann cell but enclosed by myelin sheath forming an oligodendrocytes. Not found in autonomous and somatic neural system. क्या feature है about unmyelinated nerve fiber? What are the features of unmyelinated nerve fibers? 20 seconds, come on. It is not enclosed by a Schwann cell and not enclosed by myelin sheath. Enclosed by Schwann cells but does not have myelin sheath. Or not enclosed by Schwann, enclosed by myelin, or not found in autonomous and somatic neural system. So of course children, नाम से ही पता चल रहा है unmyelinated है, तो इसमें myelin sheath नहीं होगी, but definitely it is enclosed by Schwann cells. Schwann cells are there but myelin sheath is not produced. Okay, clear? So you see NCERT snip.
myelinated nerve fibers found in spinal and cranial nerves, basically central nervous system का part है. Unmyelinated nerve fibers enclosed by Schwann cell that does not form myelin sheath around the axon. They are commonly found in autonomous and somatic neural system. Okay, clear? So myelinated nerve fibers में myelin sheath होगी. कहाँ मिलेंगे? Spinal cord और cranium में, right? Brain में. एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में श्वान सेल्स होंगे, माइलिन शीथ नहीं होगी. कहाँ मिलेंगे? ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में. ऑटोनॉमस इज विच इज इनवॉलेंट्री, नॉट अंडर योर कंट्रोल. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इज अंडर योर कंट्रोल, वॉलेंट्री मसल्स. क्लियर? स्केलेटल मसल्स. नाउ AIPMT question. During the propagation of a nerve impulse, propagation means traveling, spreading. The action potential results from the movement of potassium ions from extracellular fluid to intracellular fluid, sodium ions from intracellular fluid to extracellular fluid, potassium ions from intracellular fluid to extracellular, or sodium ions from extra to intracellular fluid. How does, action potential get generated? By the movement of sodium and potassium ions. 20 seconds, hurry up. During the propagation of nerve impulse, action potential results from sodium ions or potassium ions moving from inside to outside or outside to inside. So 3, 2, 1, time up. Children, right answer is potassium ions from extracellular fluid, they move into intracellular fluid, and that's how action potential is resulted. Okay, action potential is generated. Next, AIPMT question. During the transmission of nerve impulse through a nerve fiber, the potential on inner side of the plasma membrane has which type of electric charge? Inner side of the plasma membrane means axonal membrane की बात हो रही है. किस तरह का चार्ज मिलेगा आपको initially and how will it change? First negative, then positive, again back to negative. First positive, then negative, continue to be negative. First negative, then positive, continue to be positive. First positive, negative, and again to positive. Read all these statements carefully. ध्यान से पढ़ो. Then I'll begin your timer. During the transmission of nerve impulse through a nerve fiber, potential on the inner side of the plasma membrane has which type of electric charge? 20 seconds, hurry up. First negative, then positive, and again back to negative. Positive, negative, continues negative, or what else? 4, 3, 2, and 1. So of course children, inside of the membrane की बात हो रही है, तो इनिशियली यहाँ पर हमें मिलता है नेगेटिव चार्ज, राइट. फिर इनफ्लक्स ऑफ सोडियम के कारण यहाँ पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज. बट जब पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट साइट पर मूव कर जाता है तो फिर से इस रीजन में क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज. सो फर्स्ट इट इज नेगेटिव, देन पॉजिटिव, एंड देन इट इज अगेन नेगेटिव. क्लियर? एंड दिस नेगेटिविटी वाज बिकॉज ऑफ पोटेशियम आयंस followed by influx of sodium, it became positive, and then again sodium moves to next side, so it is negative. Clear? You can see here also diagram from NCERT book. तो ये A region है और ये B region है. A region पर situation थी, right? यहाँ पर action potential generate हुआ. तो पहले okay, चलो हम यहाँ से समझते हैं B side से, क्योंकि यहाँ दोनों charges दिखेंगे आपको. तो यहाँ पर negative है, right? दिस इज अ नेगेटिव सिचुएशन, बट पॉजिटिव यहाँ पर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर जब पॉजिटिव इधर मूव कर जाएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा? इट विल बिकम नेगेटिव. क्लियर? दैट्स हाउ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड. ब्रेन स्टेम डज नॉट इंक्लूड. तो देखो इसी साल का क्वेश्चन था कि ब्रेन स्टेम में क्या क्या इंक्लूडेड है, और अब पूछ रहे हैं कि ब्रेन स्टेम में क्या नहीं इंक्लूडेड है. सो मार्क नॉट वर्ड. मिड ब्रेन, medulla, pons, cerebellum, which is not included in brain stem. 20 seconds, simple question. Brain stem does not include midbrain, medulla,
pons cerebellum. 5 4 3 2 1 time up. Of course children, right answer is brain stem is not going to include cerebellum. So I told you कि cerebellum is a part of hind brain, लेकिन actual में this mid brain portion, this pons portion and this medulla portion, right? This is mid brain, this is pons and this is medulla. They make up the brain stem. But how does the cerebellum lie? Cerebellum lies like this, okay? So it's towards the side. Clear? तो ये brain stem का part नहीं है. 3 major regions that make up your brain stem include midbrain, pons and medulla oblongata. Brain stem is going to form connection between brain and spinal cord. So brain और spinal cord के बीच का connection है this brain stem part, जिसमें तीनों आ जाते हैं midbrain, pons and medulla. Clear? Understood? Which of the following statements is correct? AIPMT का क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Neurons regulate endocrine activity but not vice versa. Endocrine activity means chemical related activity, hormone release related activity. Endocrine glands regulate neural activity and nervous system regulates endocrine glands. Neither hormones control neural activity nor neurons control endocrine activity. Endocrine glands regulate neural activity but not vice versa. तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा सिस्टम को कंट्रोल करता है और कौन सा नहीं? ओके, दैट्स द क्वेश्चन. क्या न्यूरल सिस्टम केमिकल सिस्टम को कंट्रोल करता है या केमिकल सिस्टम न्यूरल सिस्टम को कंट्रोल करता है या दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? ओके, दैट्स द क्वेश्चन. 20 seconds, hurry up. Neurons regulate endocrine activity. Endocrine glands regulate neural activity. Neither hormones control neural activity nor neurons. Endocrine glands regulate neural activity. 4, 3, 2 and 1 time up. Of course children, right answer is neurons. You know, brain can control chemical activity but not vice versa. Chemical system is not going to control neurons. So brain is the, or you know, associated neurons are the masters of the body, right? They are the control system of the body. Even endocrine system में इन्हीं की regulation से चलता है. We know pituitary gland, hypothalamus gland, they are all getting their, you know, signals from the neurons. Clear? Next, one of the examples of action of autonomous nervous system is, what is autonomous nervous system? That works on involuntary muscles, that works itself, हमारे control की ज़रूरत नहीं है. Is that example knee jerk response, pupillary reflex, swallowing of food or peristalsis of intestine? तो autonomic nervous system, if you know, involuntary muscles को control करता है. Involuntary muscles which are totally not under your control. 20 seconds, hurry up. One of the examples of action of autonomous nervous system is knee-jerk response, pupillary reflex, swallowing of fluid, peristalsis of intestine. 4, 3, 2, 1, time up. So of course children, right answer is peristalsis of intestine. Intestine, right, visceral muscles हैं, तो जो भी फूड का मूवमेंट होगा थ्रू द इंटेस्टाइन, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. यू आर नॉट गोइंग टू गिव इट परमिशन कि अब पेरिस्टालिसिस हो, अब ये मूवमेंट हो, फूड जो है मूव करे आगे लार्ज इंटेस्टाइन में. तो दैट्स नॉट योर कमांड. ये किसका कमांड है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, दैट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ योर बॉडी, विसरल मसल्स ऑफ योर बॉडी. विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स. क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी and motor signaling for the cerebrum? cerebrum में right सबसे major coordinating center कौन सा है जो sensory और motor neurons को regulate करता है? Is it hypothalamus, thalamus, corpora quadrigemina or amygdala? Which part of the brain is a major coordinating center for sensory and motor signaling of cerebrum? 20 seconds.
major coordinating center for sensory and motor signaling of cerebrum. Hypothalamus, thalamus, corpora or amygdala. 5, 4, 3, 2 and 1. Time up. Right answer is thalamus is going to act as a coordination center. Thalamus, right, यहाँ पर located है just near your mid brain, right? Okay, and it is going to take signals to the brain, bring signals back from the cerebellum, right? Cerebrum, like that. Okay, तो ये सबसे ज्यादा coordination activity कहाँ चलती है? Thalamus के अंदर. Yeah? So you can see, mark your line in the NCERT book. Cerebrum wraps around a structure called thalamus, which is a major coordinating center for sensory and motor signaling. Okay, and फिर thalamus के पास ही located होता है hypothalamus, जिसका function हम पढ़ चुके हैं. Is that clear? Main coordination center in the brain is thalamus. It is controlling coordination between brain and the body. Brain and the body. Okay, clear? 4 healthy people in their 20s got involved in injuries resulting in damage and death of few cells of the following. Which of these cells are least likely to be replaced by new cells? AIPMT 2005 का क्वेश्चन है कि कुछ यंगस्टर्स जो हैं they got injured in an accident and they had lost some cells of their body, लेकिन उन cells की कोई replacement नहीं है. Which cells could those be? Osteocytes, Malpighian layer of the skin, liver cells or neurons? 20 seconds, hurry up. Which cells of the body can never be replaced? You can answer the question. Let me have water in that vial. Three, two, one. Time up. Of course, children, right answer is neurons are the brain cells. They can never be replaced. इनकी कोई न्यू सेल जनरेशन नहीं होने वाली है, इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होने वाली है. जो इनिशियल सेल्स थे, इफ दे आर डेड सो दे आर डेड फॉर एवर. ठीक है, न्यूरॉन्स कभी भी रीजनरेट नहीं होते हैं बॉडी में. ओके, द नंबर इज फिक्स्ड. इन द रेस्टिंग स्टेट, AIPMT क्वेश्चन, इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इफ अलाउड वुड ड्राइव. अगर रेस्टिंग स्टेट में है न्यूरल मेम्ब्रेन, लेकिन अगर डिफ्यूजन होगी तो कैसे होगी? Potassium into the cell, potassium and sodium out of the cell, sodium into the cell, sodium out of the cell. Diffusion across a membrane. कहाँ पर कौन सा चार्ज ज्यादा है वो सोचो. जिधर जौन सा चार्ज ज्यादा होगा उधर से नेगेटिव कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करेगा, राइट? सो 20 seconds, सिंपल क्वेश्चन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. Which charge is going to move under diffusion gradient? Potassium, potassium and sodium into the cell, out of the cell. So time up. Of course children, sodium is going to flow into the cell because हमें पता है concentration किसकी ज़्यादा है. Sodium is more outside. Sodium is more outside, so it needs to travel inside, right? तो ये diffusion और concentration gradient के basis पर move करेगा. Clear? Next question, AIPMT 2003. What used to be described as Nissel's granules in a nerve cell are now identified as? तो हमने पढ़ा है कि ये dendrite है, right? This is the cell body. This is the cell body, right? Like this. The cell body has dendrites. The cell body has dendrites like this. Clear? ऐसे dendrites है. And in the cell body you have, in the cell body or the stoma you have a nucleus, you have cytoplasm, और इस cytoplasm के अलावा क्या present है यहाँ पर? Nissel's granules आकर. तो basically पूछ रहे हैं what are these Nissel's granules made up of? ये Nissel's granules किस चीज के बने हुए हैं? And this is the axon, okay? So this is the axon. Are the Nissel granules made up of ribosomes, mitochondria, cell metabolites or fat granules? What used to be described as Nissel's granules are identified as what?
20 seconds, hurry up. Write your answer. Ribosomes, mitochondria, cell metabolites or fat granules? 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Time up. So of course children, right answer is it is made up of ribosomes, right? Ribosomes along with RER, they make up the Nissel's granules. They make up the Nissel's granules, mostly ribosomes. Clear? Which of the following statements is correct about nodes of Renwier? तो हमें पता है कि जब हम एक्सॉन बना लेते हैं, राइट, इन अ नर्व सेल, तो नर्व सेल में वी फाइंड माइलिन शीथ लाइक दिस अराउंड दी श्वान सेल्स, राइट? श्वान सेल्स के अराउंड हमें ऐसे माइलिन शीथ मिलेगी, राइट? सो which of the following is correct about nodes of Renwier? Exolemma is discontinuous, myelin sheath is discontinuous, both neurolemma and myelin sheath are discontinuous, or they are covered by myelin sheath. Which part is node of Renwier? Okay, तो ये तो हो गए Schwann cell, this is Schwann cell and this is myelin sheath, this is myelin sheath. Okay, तो अब आपको बताना है कि नोड ऑफ Renwier के बारे में कौन सी स्टेटमेंट राइट है. 20 seconds, hurry up. Come on, give the right answer. Exolemma is discontinuous, myelin sheath is discontinuous, both neurolemma and myelin sheath are discontinuous, they are covered by myelin sheath. 3, 2, 1, time up. So right answer is, children, you can see myelin sheath discontinuous है, right? You can't find continuity in it. और इनके बीच में जो गैप है माइलिन शीथ के, this gap or this one, these are nodes of Renwier. So myelin sheath is discontinuous. That is true about nodes of Renwier because this region is node of Renwier. Node of Renwier. Okay, is that clear? See, there are two types of axons, myelinated, non-myelinated. Myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells which form myelin sheath around the axon. Gaps between two adjacent myelin sheaths are called nodes of Renwier. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमने ये क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किया दैट हैज कम. गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट्स क्या कहलाएगा? नोड ऑफ Renwier. सी द गैप, दिस इज द गैप. Gap between two adjacent myelin sheaths is node of Renwier. Next question, again related to action potential, conduction of impulse. An action potential in the nerve fiber is produced when positive and negative charges on the outside and inside of the axon are reversed. तो action potential तभी generate होता है जब positive और negative अपनी place को change कर लेते हैं. Because more potassium ions enter the axon as compared to sodium ions leaving it. More sodium ions enter the axon as compared to potassium ions leaving it. All potassium ions leave the axon. All sodium ions enter the axon. Which of the following statements is right about action potential? ज़्यादा पोटेशियम एंटर करेगा सोडियम की बजाय, ज़्यादा सोडियम एंटर करेगा एक्सॉन में इन कंपैरिजन टू पोटेशियम, सब पोटेशियम आयंस लीव कर जाएंगे एक्सॉन को, या सब सोडियम आयंस एंटर कर जाएंगे एक्सॉन में. 20 seconds. When is action potential generated? Hurry up, read the answer, read the options carefully. Last 5 seconds. 4, 3, 2 and 1. Time up. Right answer is more sodium enters the axon. So what happens? This is the axon membrane, right? Action potential यहाँ पर impulse generate हुई है. So what is going to happen? ज़्यादा से ज़्यादा sodium अंदर move कर जाएगा as compared to potassium ions, right? So more sodium was present outside, but now more sodium will be influxing into the axonal membrane, exoplasm. Resting potential is established primarily due to. तो जब resting potential होता है तो उस टाइम क्या सिचुएशन होती है? It is established. What is the reason? Sodium potassium pump,
efflux of potassium, influx of sodium, influx of chloride. Which of the following? अब जरूरी नहीं है हमेशा जब भी पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यू हैव टू टॉक अबाउट आयंस और चार्जेस, राइट? कौन इनफ्लक्स हो रहा है, किसका इफ्लक्स हो रहा है. जस्ट थिंक अबाउट ऑल द ऑप्शंस. रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम क्या होगा एंड देन आंसर. 20 seconds, come on. Simple question, very simple. They are just asking you the basis behind it. Resting potential is established primarily due to sodium potassium pump, efflux of potassium, influx of sodium, influx of chloride. Time up. So of course resting potential is established by efflux of potassium, right? More and more potassium will move outside into the exoplasm, and that's how it will be created. Clear? Next question. Human neural system has CNS, PNS, both A and B, MNS. So CNS is central nervous system, PNS peripheral nervous system, both A and B, and MNS. 20 seconds. Human neural system has which of the following as its part? Hurry up. Time up. Of course, children. CNS and PNS, central nervous system, peripheral nervous system, both are the parts of human neural system. Simple question, NCERT based. Again, question from PYQ. Which of the following is regarded as unit of nervous tissue? So we have done unit of life, we have done unit of kidneys functioning. Now they are asking you nervous tissue की unit क्या कहलाती है? Is it myelin sheath, axon, dendrite, neuron? Simple question. 20 seconds, you can answer easily. It's very, very simple question. Which of the following is regarded as unit of nervous tissue? Myelin sheath, axon, dendrite, neuron. 5, 4, 3, 2, 1. Time up. So of course, children, neurons make up the nervous tissue. Lot many neurons are going to form a nervous tissue and help in coordination of the body along with brain. Okay, according to the brain. So command is going to come from the brain to the body through the motor signals, and from the body to the brain it is going to go through sensory signals. Okay, through neurons. Gaps between two myelin sheaths are called what? Very simple question, abhi kiya tha. Nodes of Renwier, axonal terminal, synaptic knob, Schwann cell. Simple question. 20 seconds, hurry up. Just think about it. One thing I would like to suggest कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, just don't land up on the answer कि यही आंसर होगा. चारों ऑप्शंस को equally consider करें and then reach to your final answer. So, of course, children, right answer is nodes of Renwier. So, I've told you this is axonal membrane, this is myelin sheath, right? And myelin sheath has Schwann cells inside, and the gap between the myelin sheath is nodes of Renwier. Okay, clear? Next, which of the following is not associated with autonomic neural system? Not associated. Sympathetic neural system, parasympathetic, somatic neural system, both B and C. Not associated. 20 seconds, hurry up. 20 seconds, hurry up. Not associated with autonomic neural system. Which of the following? 5, 4, 3, 2, and 1. Time up. Of course, children, right answer is the somatic neural system is not a part of ANS. ANS is totally controlling involuntary muscles of your body, right, which are not under your control, and somatic neural system is dealing with voluntary muscles of your body which are under your control. Clear? So somatic neural system separate है, sympathetic, parasympathetic, autonomic neural system का part है. Clear? AIPMT question.
the junction between axon of one neuron and dendrite of the next. ठीक है, तो बेसिकली ये एक न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, राइट? दीज आर द एक्सॉन टर्मिनल्स लाइक दिस, दीज आर एक्सॉन टर्मिनल्स एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. ये नेक्स्ट न्यूरॉन है कोई, राइट? और उस नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं. क्लियर? तो ये जो रीजन है इनके बीच का, व्हाट इज इट कॉल्ड? दैट्स द क्वेश्चन. तो टू न्यूरॉन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर, बट व्हाट इज द junction between them called? Junction point, synapse, joint, constant bridge. Simple question, very very simple. 20 seconds, hurry up. What is the junction between axon of one neuron and dendrite of the next neuron called? Junction point, synapse, joint, constant bridge. 3, 2, 1, time up. Of course children, this region is called synapse region, which is made up of, in return, right, this synapse region is made up of 3 regions. See, this is presynaptic membrane, presynaptic membrane, this is postsynaptic membrane, बिकॉज सिग्नल एंड होगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, लेकिन यू नो पहुंचेगा कहाँ? इट विल रीच टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, राइट? और इन बिटवीन जो ये सारा गैप है, इट इज कॉल्ड साइनेप्स, इट इज कॉल्ड साइनेप्स, और सॉरी साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ओ लेट्स जस्ट करेक्ट इट, दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ओके, और इन तीनों रीजन्स को, प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को टुगेदर वी कैन कॉल synapse region. We can call it synapse region. Okay, so portion prior, after and in between gap is called synapse region. Clear? When a stimulus, NCERT based question, when a stimulus is applied at a site over neural membrane, what happens? तो आपने एक stimulus जो है, right, apply किया neural region पर, basically you have given an impulse, okay? So what happens? It becomes freely permeable to sodium, it becomes freely permeable to potassium, it causes reversal of polarity from positive to negative, both A and C. So this is both A and C. Okay, 20 seconds, hurry up. When a stimulus is applied at the site of a neuron membrane, what happens? How does the permeability of the membrane change? Does it become permeable to sodium, potassium? Reversal of polarity occurs? What happens? So time up. Right answer is, it is becoming freely permeable to sodium ion. I've told you numerous times, sodium ions are going to come from outside of exoplasm to the inside, like this. Okay, so it becomes freely permeable to sodium ions as soon as some stimulus is applied. Clear? Sodium potassium pump in neural membrane is responsible for transfer of 3 sodium ions outwards, 2 potassium inwards, transfer of 2 sodium outwards, 3 inwards, transfer of 2 sodium ions, 3 potassium inwards, responsible for transfer of sodium and 3 potassium. Read the options carefully. I'm giving you time. No hurry and no worry about the timing. Please read the question, read the options carefully. Sodium potassium pump in general कैसे operate करता है? कितने sodium ions का influx या efflux होगा? And how many potassium will be influxed and effluxed? Read the options. So 20 seconds, hurry up. तो सोडियम पोटेशियम पंप आपने पहले भी पढ़ा है, मसल रीजन में हमने इसके बारे में बात की है, राइट? वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट इट इन स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग, राइट? तो सोडियम पोटेशियम पंप की नेचर क्या है? 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स फॉर एवरी 3 sodium ions that move in or out,
2 potassium ions will be exchanged. 2 potassium ions will be exchanged. Okay, so 3 sodium coming out, so 2 potassium will be given inwards. Okay, clear? Next question, AIPMT 1997, sympathetic nervous system, basically emergency system. When you want to give a reflex action, right? आपके कंट्रोल में नहीं है तब कौन सा सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में रन करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. It induces heartbeat, secretion of digestive juices, secretion of saliva, or all of the above. Sympathetic nervous system induces what? 20 seconds, hurry up. Heartbeat, secretion of digestive juices, secretion of saliva, all of the above. Heartbeat, saliva, digestive juices. Yes. So of course children, sympathetic nervous system, it will be dealing with the heartbeat. तो जब emergency situation होगी, heart rate increase हो जाएगा, heart beat increase हो जाएगी, cardiac output increase हो जाएगा, breathing rate increase हो जाएगा, blood pressure will increase, so that will be an adrenaline rush. emergency situation होगी body के लिए. तो sympathetic nervous system emergency में कैसे act करता है? By increasing all this activity. और इसको फिर कंट्रोल करने कौन सा सिस्टम आएगा? इट विल बी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विच विल ब्रिंग ऑल द सिचुएशन बैक टू नॉर्मल. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रिपीटेड वन, AIPMT में दोबारा से पूछा गया. Nissls granules of nerve cells are made up of राइबोसोम, प्रोटीन, DNA, RNA. सिंपल क्वेश्चन, अभी बताया था मैंने आपको, पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम नीट में. 20 seconds, हरी अप. Nissls granules of nerve cells are made up of ribosomes, protein, DNA, RNA. 5, 4, 3, 2 and 1. Of course, right answer is Nissls granule is made up of ribosomes. Lot of protein synthesis going on. Okay, clear? Resting axonal membrane of a neuron, resting one. Right? It has what? It is not polarized, has an excess of anions on outside, more permeable to potassium ions than to sodium, cannot be excited by a stimulus. Resting potential of a neuron is 20 seconds. Is it not polarized? Has excess of ions, more permeable to potassium than to sodium, cannot be excited by stimulus. 5, 4, 3, 2 and 1. Right answer. Of course, it is more permeable to potassium. हमें पता है जब resting state होता है तो ज़्यादा क्या अंदर present होता है? Potassium. More potassium will be influxed, okay, than sodium. In humans, visceral organs are innervated by AIPMT question. Sympathetic nerves and are under conscious control. Parasympathetic nerves under conscious control. Both A and B. Both sympathetic, parasympathetic nerves but are not under conscious control. Visceral organs are innervated by 20 seconds. तो जिन बच्चों को पता है visceral organs means internal organs of a body, उनसे related जो muscles हैं वो किस control में होंगी? Sympathetic system, parasympathetic system, conscious control, not conscious control. 3, 2, 1, time up. Of course, children, visceral organs will be under the control of both sympathetic and parasympathetic. तो basically हम कह सकते हैं ANS के अंडर, autonomic neural system के अंडर हैं, right? लेकिन conscious control में नहीं है. Conscious control में होती तो हम बात करते CNS की, right? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, वॉलेंट्री मसल, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की, राइट? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पर कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है? विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक. इज दैट क्लियर? रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन, हमें पता है ब्रेन में बहुत सारे सेंटर्स लोकेटेड हैं जो रेगुलेशन करते हैं रेस्पिरेशन की, एक्सक्रेशन की, सर्कुलेटरी पाथवे की, राइट? तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड है? सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम.
AIPMT question asked twice. Cerebellum, medulla oblongata, hypothalamus, cerebrum. 20 seconds, hurry up. Respiratory center of the body is situated in which part of the brain? Simple question. You have read this in breathing and exchange of gases chapter also. 3, 2, 1, time up. So of course children, it is located in the medulla region. It is located in the medulla region, respiratory rhythm center. Okay, clear? AIPMT question. CNS is mostly made up of. Central nervous system में क्या क्या included है? Motor neurons, sensory neurons, association neurons, motor and association. So very simple question from your NCERT book only. 20 seconds. Simple question. Which type of neurons make up the central nervous system? Motor neurons, sensory and association. तो एसोसिएशन न्यूरॉन्स जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ऐसे न्यूरॉन्स जो सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं उनको हम कहते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन्स. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोस्टली ऐसे न्यूरॉन्स का बना है विच आर बोथ सेंसरी एंड मोटर इन नेचर. सेंसरी न्यूरॉन्स वो जो सिग्नल को ब्रेन के पास लेके जाएंगे, राइट, फ्रॉम द बॉडी, एंड मोटर सिग्नल्स वो मोटर न्यूरॉन्स वो जो ब्रेन से लेकर आएंगे टुवर्ड्स द बॉडी. तो ऐसे न्यूरॉन्स जो दोनों ही एक्टिविटीज करते हैं, taking it to the brain, bringing it back to the body, that's called association neuron. Is that clear? Afferent nerve fibers carry impulses from. तो हमारी बॉडी में दो तरह के नर्व फाइबर्स हैं, एफरेंट, इफरेंट, राइट. तो एफरेंट नर्व फाइबर्स कहां से कहां सिग्नल पहुंचाएंगे? इफेक्टर ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसेप्टर में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स में. 20 seconds, हरी अप. Afferent nerve fibers carry impulses from effector organ to CNS, receptor of your body to CNS, CNS to receptor, CNS to muscles. 3, 2, 1, time up. So of course children, right answer is from the receptors of your body to the central nervous system, it is carried by afferent nerve fibers, right? And from central nervous system to the receptors of your body or to the effector organs of your body, to the effector organs of your body, not receptors, right? To the effector organs of your body, it is carried by efferent nerve fibers. Efferent nerve fibers. So that's all बच्चों, ये थे क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अब हम बच गए हैं सिर्फ एक लास्ट चैप्टर के साथ जो कि हम कल कंप्लीट करेंगे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हम मिलते हैं एवरी ट्यूसडे टू फ्राइडे 5:30 to 7 PM. मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका. जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए आज और कितने गलत. सो आई होप you enjoyed the session. If it is so, hit the like button, share this session and subscribe to channel Vedantu NEET Made Easy. See you next time. Till then, take care.